दिख रहा नहीं देखो तो नहीं, अरे हाँ, तूने पूरे स्क्रीन करना पड़ेगा शेयर। मेन स्क्रीन शेयर कर दे। 203। यस, हार्ट। इट इज, हाँ, नीचे नीचे। क्या नंबर था उसका? थोड़ा सा नीचे आ जा, आंसर है, काउंट काउंट। हाँ, काउंट काउंट, चल। थोड़ा अंतर हो गया। हाँ ठीक है। हार्ट कंपनी फोरकास्ट ठीक है। न्यू ऑडिट क्लाइंट। ठीक है ठीक है। द हार्ट कंपनी इज फोरकास्ट ए, एक। न्यू क्लाइंट है, न्यू क्लाइंट है। हाँ तो अपना वो आएगा क्या बोलते हैं न्यू क्लाइंट वाला। एक मुझे ढूंढना क्या वो देख लेते पहले। ऑडिट रिस्पॉन्स करना चल ठीक है। न्यू क्लाइंट का एक तरह ये हो गया। ठीक है। टोटल एसेट ठीक है फाइंड डायरेक्टर इंडिकेट दैट डायरेक्टर आर वेरी प्लेस टू फोरकास्ट। ठीक है बोनस डायरेक्टर आर पेड बोनस बेस्ड ऑन प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इन शॉर्ट मेरा स्क्रीन है। चल ठीक है छोड़। ठीक है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म शुड बी हाँ मेंटेन थ्रू आउट द टाइम ऑफ द ऑडिट, क्योंकि एंड रीजनेबलनेस बिकॉज, हाँ हाँ, एक्स्ट्रा फोकस शुड बी रीजनेबलनेस। प्लेस्ड। हाँ, रीजनेबलनेस आई रीजनेबलनेस डोंट रिमेम्बर, बट board to ensure that board bonus are based on the profit before tax वाला। एक बार देख ले, आंसर के साइड में जा देख ले। अरे यार फिर से कोई ना, कोई ना, मेरा कोई स्क्रीन ना। बराबर दिख रहा है स्क्रीन हाँ बराबर हाँ दिख हाँ, रहा है। दिख रहा है, स्क्रीन बराबर दिख रहा है। हाँ तो ठीक है। तेरा ऐसे भी देखने लायक है नहीं, हाँ। थैंक्स ब्रो थैंक्स यू आर मैन। डायरेक्टर्स बोनस, एक बार डायरेक्टर्स बोनस जरा पढ़ लेते हैं, मुझे एक मेरे को पढ़ लेते हैं। हाँ, ठीक है, ठीक based है, on ठीक profit before tax ठीक है। है। The audit team should be aware of the risk of manipulation and should be more experienced audit member more assigning the judgment of area। ठीक है। Also adequate time should be allocated to obtain understanding of the company and significant is overstating of profit and including the attendance of officially तो अपन the जो team need न्यू to ऑडिट maintain क्लाइंट में professional लिखेंगे, skepticism अपन जो न्यू वो ऑडिट सेम। क्लाइंट में लिखेंगे वही पूरा का पूरा नीचे छाप कॉपी पेस्ट। और क्या। खाली इतना ही बोल देंगे चेक करना मैनिपुलेशन तो नहीं है और ये चेक करना ओवरशेड ऑफ प्रॉफिट तो नहीं है। Manipulations। अपन ये बोल देंगे कि एक्स्ट्रा अटेंड, अपन इधर से बोल देंगे टीम शुड मेंटेन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एंड बी अलर्ट टू कंडीशन ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ डायरेक्टर्स बोनसेस या ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो दैट थोड़ा लगे कि अरे वाह, इन्होंने कुछ तो नया लिखा, बट ने एक्चुअली कॉपी पेस्ट ही ओके। किया। The Hart company is understanding the construction to place exchange site various location across the country. All playgrounds are constructed specifically. Customer pay 25% of deposit on signing contract. The balance payable contract. Okay. इसमें दो चीज होगा। First, the auditor should be make the place make the important place significant should be visited first which is a highly chance of misstatements or which has an exception count should be pending or this time and which site which have not been yet been visited the remaining site the exception count should be made during the year and should be investigated। एक वो हो जाएगा। और दूसरा तेरा ये हो जाएगा। हाँ, the 20% amount received from the customer should not be treated as revenue. It should be it should be made क्या बोलते हैं उसको in a contingent liability a provision वो वाला है ना। I don't remember. But it should not be treated as revenue, and extended post year and testing should take place in order to identify if any payments have been made after the year end by the customers. But एक minute, and the and it should be parents removed। member when control of हम्म, payments हम्म, transferred to the customer. Vans.
payable control after the customer. हाँ ये भी बोल सकता है ना कि इट शुड बी रिमूव फ्रॉम द बैलेंस शीट फ्रॉम करंट रेवेन्यू. आजा आजा मेरे को याद नहीं है. रेवेन्यू recognition directly है. एक मिनट रुक जा. Customers pay 25% of the deposit on signing the contract of playground. The deposit should be recognized as revenue. Should not be recognized as revenue immediately. Instead should be recognized as a deferred income. Deferred income with current liabilities as deferred income. Deferred income with current liabilities until the performance obligations as per the contracts have until the performance obligations as per the contracts have been satisfied. The deferred income is likely to be at a point in time when control of the playground is passed to the customer. This is like okay. Problem. Okay. मैं शेयर कर लेता हूँ गाइस. तो मैं शेयर करता हूँ गाइस. ये टेंशन ये हो गया. हाँ. It is likely to be a point in time when the control of playground is passed to the customer. There is a risk that revenue is overstated and the current liabilities understated if the deposits have been recorded when with revenue. The audit team should obtain a copy of contracts from customers and review them to understand the performance obligations. Audit team should obtain a copy of contracts from the customer. The audit team should obtain a copy of contracts with the customer and review them to understand the performance obligations. They should discuss with the management the criteria for determining whether performance obligations have been satisfied and treatment of deposits received to ensure it is appropriate with a consistent with relevant standards. Yeah. Yeah. तो जैसे अपन ने बोला था कि the audit team should obtain a copy of contracts with customers from customers to understand the performance obligations. ये performance obligations होते हैं कि करने के बाद ही हम 75% of the payment करेंगे. They should discuss with the management the criteria for determining whether performance obligations have been satisfied and the treatment of deposits received to ensure it is appropriate and consistent with the relevant standards. They should discuss with the management the criteria. If the ऐसे बोल दिए कि they should discuss with the management whether the performance obligations have been satisfied and what accounting treatment was being provided when the rest of the 75% was paid or consistent with the relevant standards, and the treatment of deposits received to ensure it is appropriate and consistent with relevant standards. What accounting treatment was provided to the deposits. Okay. During the final audit, the audit team should undertake increased. During the final audit, the audit team should undertake increased test over cutoff of revenue and the completeness of deferred income. The cutoff of revenue and completeness of deferred income. During the final audit, the audit team should एक काम करना इसका फोटो लेके ग्रुप पे डाल दे. ये अच्छा है. revenue recognition as deferred income. During the final audit, the audit team should undertake increased cutoff testing of sales and cutoff revenue and completeness of deferred income. Super. The team should obtain a contract with the customer and review for understanding the performance obligations, performance payment. They should discuss with the manager the criteria determining when the performance obligation have been satisfied and treatment deposit received to ensure that it is appropriate and consistent. It should be discussed with the direct. It will be discussed with the management that it is for. It should be the deferred income should be following the criteria mentioned and the
and क्या वो and the deposit receipt. यार कोई डिपॉजिट रिसीव का मैं पॉइंट समझ नहीं पा रहा हूँ, आगे क्या लिखूँ क्या? देख ट्रीट देख कौन व्हाट सा द वाला? ट्रीटमेंट हैज बीन डन, ये साइड वाला ये। राइट। हाँ राइट साइड का सेकंड पड़ेगा, देख ये वाला ट्रीटमेंट ऑफ ये ना, डेपोजिट। हाँ हाँ हाँ। हाँ ना। सो इन्होंने क्या बोला है, दे शुड डिस्कस विद द मैनेजमेंट द क्राइटेरिया फॉर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। अपन ऐसा लिख देंगे, डिस्कस विद द मैनेजमेंट if performance whether performance obligations were satisfied। एप्लीकेशन वो सेटिस्फाइड, उसके आगे में मतलब क्या था कि कस्टमर तभी 75% पेमेंट करेगा जब तुम लोग उसको वो माल दे दोगे प्रॉपर, बाकी 25% तो तुमने एडवांस में लिया हुआ है ऐसा। They should discuss the management whether performance obligations were satisfied and what accounting treatment was provided to the deposits received। व्हाट लास्ट में क्या बोला? And what accounting treatment was provided to the deposits received। व्हाट अकाउंटमेंट ट्रीटमेंट शुड बी provided for accounting received. was provided, उन्होंने कुछ तो प्रोवाइड किया हुआ है, तो what accounting treatment was provided by the management on the deposits received। They should be discussing the manual criteria for determining whether the performance obligation have been satisfied. Performance obligation has been satisfied, and the treatment what treatment na? What treatment? What treatment has been treated to deposit received. बराबर, बस बाद में हाँ बराबर। During the final audit, increase the cutoff testing on sales and the completeness of deferred income। तो तू कस्टमर से परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस obtain a copy of customers क्या था, obtain a copy of contract from the customers to understand the performance obligations, then discuss with the management what accounting discuss with the management whether the performance obligations were satisfied and what accounting treatments did they provide to the deposits received during the year end or during the final audit. Increase the cutoff testing on sales should take place, and the completeness of deferred income should be reviewed। अच्छा, मेरे को प्लेग्राउंड से तो मेरे को समझा, वरना नहीं समझा। what what you are what you what what assume if you are having a good day, then clap your hands. बहुत ही फालतू चीज की है। मैं समझी भी नहीं, बट ठीक है। अरे देख ना, मैं गायब हो गया था मेरा हैंड्स, ये देख, आई डोंट हैव बोले हैंड्स। बोले Okay, the balance of work in progress WIP at 30th June is 7.6 million in respect of the playgrounds under construction. The WIP count and valuation have been carried out at all sites on 30th of September 2015. Arrangements have been made for the audit team to attend only 5 of these WIP counts. तो वो इधर वाला हो जाएगा। इनके कितने थे साइट्स 16 साइट्स थे ना, तो ओनली 5 साइट्स, तो तू वो वाला डाल देगा कि Which of the five sets should be recorded? Showing the misstatements by the management and other remaining कितना बचा तेरा? 11 sites should be obtain an exceptional report. नहीं, Exceptional report है पूछता है वो। पहले तो ऐसा बोलेगा कि द ऑडिटर शुड असेस, इट इज नॉट पॉसिबल, अपन वहां पे लिख देंगे, एंड देन जैसा तूने बोला वैसा एक्सप्लेनेशन में। आज एक बार देखूंगा, तो वो फॉर्म देखना है एक बार। Our team only attend WIP count at 5 out of 16 sites. The WIP is material balance and the valuation of WIP is the judgmental area. As the audit team is not attending all sites, the detection risk, okay, the detection risk इनकी जरूरत है। अच्छा अच्छा, एक मिनट रुका। WIP को attend नहीं करता हो, then detection risk is increased as the team will be unable to directly obtain evidence relating to WIP. The auditor should assess which WIP counts the team will attend. रुक जा। The auditor, Rahul, the auditor should assess which inventory counts the team will attend.
are most likely to be those with the most WIP balances or which are assessed to have greater risk of misstatements. For those inventory or not visited, the auditing team will obtain the review documentation. नहीं 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 ये सब नहीं क्या क्या वो ये सब सब नहीं बता। आएगा लास्ट का जो इन्होंने बोला वो सब अपन नहीं डालेंगे अपन डालेंगे फॉर दोज इन्वेंटरी काउंट्स not attended by the audit team. The audit team will need to obtain an exceptional report. Exception हाँ report था एक्सेप्शन exception report एक्सेप्शन था या नोट कौन सा बोल रहे हो मैं। report था exceptional एक्सेप्शन नोट है report देख नीचे देखना। Review document relating to the control surrounding the account will need to review report have an expert using the value or WIP any exceptions noted during the count exception discussed with the noted management. during the count discussed with the management. ये सब गया भाड़ में ये सब तो मैं नहीं लिख रहा भाई ये सब मैं नहीं लिख रहा इजी तो है। नहीं इजी तो है। नहीं जरूरत ही नहीं है Doing the inventory counts not attended, the auditor will need to obtain the exceptions noted during the count and discuss with the management any issues arising during the audit. हाँ, ठीक है। वारंटी प्रोविजन आ जाओ उसमें क्या था। यहाँ पे हो गया हो गया हो गया हो गया हाँ, हो गया HART हाँ। को offers The its HART customer company offers the customer warranty no extra, which warranty that a playground will function as expected for a period of 3 years. The warranty provision current has a calculation 2% of revenue. ज्यादा है बहुत ज्यादा है। Previous year the warranty was 6% of the revenue. कम है The financial director has made the changes despite on 2% revenue का कितना होना बहुत चाहिए अरे होना मटेरियल के चाहिए लिए। वारंटी का होना चाहिए क्योंकि देख बोल भाई वैसे ही बोलना चाहते हैं कि अगर तुम्हारा रेवेन्यू इतना ज्यादा है समझ रेवेन्यू टू हाँ 1 लाख है तो उसका खाली 2% ही तो वारंटी रख रहा है वारंटी प्रोविजन होनी चाहिए कंपनी में मेरे हिसाब से अच्छा वैसा आप बोल रहा तू क्या मैं मटेरियलिटी सोच रहा था। नहीं अच्छा तू तू पीपीटी सोच रहा था तो कम है तो अच्छा है ना नहीं मतलब बहुत ज्यादा है छोड़ जाने दे 0.5% होता है ना रेवेन्यू का 0.5% होता है ना। हाँ तो मतलब बहुत ज्यादा चल है हाँ बचाता है गरीब HART आदमी है तो। offers चल ठीक है। customers a warranty that no extra cost with guarantees the playgrounds to function as expected for 3 years वो सब तो हम कॉपी पेस्ट अरे यार मैं वारंटी प्रोविजन में से IAS 37 में जाता है 1 मिनट ना 1 मिनट रुक आईएस जा 37 आईएस 37। 1 मिनट रुक जा 1 मिनट रुक जा मैंने वारंटी प्रोविजन में डाला था क्या ये मुझे चेक करना है मेरा हूँ When you happy and you know clap your hands। नहीं मेरे इसमें आया ही नहीं था ठीक है गुड वरना मैं डालने ही वाला था And you know clap your hands। चलिए। Provision 37 calculating mobility requires judgment and it is uncertain amount. There is a risk that the warranty provision could be understated, leading to understated assets and liabilities or overstatement of profit. And actually, understatement of liabilities is a better term to explain. Then, audit team should discuss with the management the basis of provision of calculation and compare it to the industry. अरे compare the industry averages to what is industry average से compare करेगा ये बहुत अच्छा point है बहुत अच्छा point है आ गया compare to the industry averages राहुल फोटो खींचना है तो खींचना चाहिए अरे खींचने के लिए तो रेडी अरे भाई 100 MB बची है। यहाँ पे अपडेट भी कर देता हूँ मैं। अपडेट कर रहा है कल कर देना अच्छा कर सम दिया सम कर रहा है सम का बोल ग्रुप का बोल रहा है ना क्योंकि ग्रुप का बोल रहा है फिर ठीक है मुझे लगा वो डिस्क्रिप्शन वाला। मुझे लगता है एप्स का देखो बोल क्या रहा लगा। है एप्स तो कल करना अपडेट ऐसा ना अरे बेशक
मेरे को पाप लगेगा अगर मैंने अब भी किया तो। हाँ, good. Our team should फॉरवर्ड ही। discuss with the management the basis of the provision calculation and compare this to the industry averages and the level of post-year end claims, if any, made by the customer, particularly the rationale for reducing the बराबर है. The audit team should also compare the prior provision with the actual level of claims in the year to assess the reasonableness of the judgment of the management. या फिर अपन discuss with the जो भी था बंदा the rationale for reducing the claim. Sorry, I meant provision. It could discuss with the management the basis for provision calculating the comparative this type of industry average, the level of post-year and claims, if any, made by the customer in particular. They should discuss with the rationale behind reducing the level of. सही है. अच्छा, मतलब रैशनैलिटी चेक करना है क्लेम्स का ना. ओके. हाँ, और स्टार्टिंग में कंपेयर विद. ठीक है. ठीक है, ठीक है. हाँ, क्या मैं सॉरी हार्ट एंड को के बाद अभी नेक्स्ट. Okay, HART बताओ. and Co has incurred expenditure of 1.8 relating to the research and development of new type of environment-friendly building. 0.6% of the expenditure to this date has been written off to the statement of profit and loss. The remaining 1.2 has been capitalized as intangible asset. No amortization has been ये recognized तो to वही date. रहेगा. Materially, ये तो भाई देखने की भी जरूरत नहीं, ये किया हुआ है. बस एक बार हाँ, ब्रेकडाउन ऐसा ले लेने चाहिए. का. बस एक बार ब्रेकडाउन वो मैं लिख दूंगा, तू मत लिख. क्या क्या. कुछ नहीं. Development expenses will be capitalized, meeting the relevant criteria. The audit team should discuss with the accounting treatment with the finance director and ensure it is in accordance with ISO 38. एक मिनट ये वाला पढ़ लेते हैं. If research costs have been incorrectly classified as development expenditure, there is a risk that intangible assets could be overstated. यार अगर मैं रिसर्च के कॉस्ट को एक मिनट अगर मैं रिसर्च के कॉस्ट को गलती से क्लासिफाइड एज डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर तो मेरे इंटेंजिबल एसेट्स बढ़ जाएंगे क्या? तेरे इंटेंजिबल एसेट जो यहाँ पे थे वो बढ़ जाएंगे, ओवर वैल्यू हो जाएंगे. क्योंकि मैंने डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को सॉरी मैंने रिसर्च एक्सपेंडिचर को डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का कंसिडर किया, इसलिए हाँ. मेरे इंटेंजिबल और जो एसेट्स तेरा बढ़ जाते हैं. एक्स और जो तेरा एक्सपेंस यहाँ पे होना चाहिए तो कम हो जाएगा. तेरा एक्सपेंस क्या है कि ये रहेगा. मेरे को अंडर वैल्यू ओवर हो जाएगा तेरा एक्सपेंस. मेरे को ओवर अंडर में समझ में नहीं आ रहा है. बताया क्या लिखता हूँ. दिस विल अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी, इतना बोल देता हूँ मैं. रिसर्च एक्सपेंडिचर अंडरस्टेटेड बराबर, वो तो बराबर है. अगर मैं रिसर्च को दिखाऊंगा ही नहीं रिसर्च में तो मेरे एक्सपेंसेस कम ही होंगे. अभी देख. तेरे क्या बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट यहाँ पे थे. हाँ, और तेरा एक्सपेंस ये नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल कॉस्ट ऑफ बराबर है. बिजनेस. अभी बराबर है. क्या हुआ, तेको रिसर्च तेको मालूम पड़ा कि तेरा 2 लाख का फटका है, खर्चा करना, तेको रिपेयर करना है, तो तेरा एक्सपेंस पे जाएगा. होना क्या चाहिए था, तेरा पीएनएल बढ़ना चाहिए था, एक्सपेंस, और ये तेरे वहीं पे रहना चाहिए था. बट तूने किया क्या, तेरे जो अदिति ने क्या किया, तेरी जूनियर अकाउंट, उसने वो डेवलपमेंट जो तेरा एसेट है, एसेट में गलती से डेवलपमेंट कॉस्ट बता दिया. तेरा डेवलपमेंट कॉस्ट बढ़ गया. बट ये तो यहीं पे रहा ना. तो तेरा जो डेवलपमेंट वाला है वो ओवर वैल्यूड हो गया, ओवर बढ़ गया, ओवर हो गया. और ये अंडर मतलब कम ही रहा. तो एक्चुअली होना क्या है, जो ये अंडर वैल्यू है, ये ओवर वैल्यू है, तो ये कम करना है, ये बढ़ा देने का है. तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर कब. if research cost is considered as if research expenditure is capitalized, then this will overstate the development expenditure or the ये फिर हाँ मैं ये बोल दूंगा क्या है. अगर कभी भी तेरा कोई भी एसेट है तेरा, ये भी होगा, फिक्स एसेट, कुछ भी चीज होगी, वो तेरा बढ़ गया, इंक्रीज मतलब मोर, मतलब ओवर ओवर ओवर, वो कम हो गया तो अंडर अंडर अंडर, लेस को अंडर पे कर, बढ़ गया तो ओवर पे. मतलब सही है. मतलब सही है समझा. हाँ हाँ, मैं तेरे को बताना भूल गया. तू अभी आईएएस तूने अभी लिखना स्टार्ट किया ना, तो उसमें जब तेरे को हाँ. पीपीई अगर तुझे कहीं पर भी ऐसा बताया ना कि रिफर्बिशमेंट ऑफ प्लांट्स हैव टेकन प्लेस. रिफर्बिशमेंट ये आईएएस अरे 38 में यार, आता है, बट प्लांट भाई, ये तेरा आईएएस मेरे को 16 में आता है. सुना मेरे को कॉल कर, मेरा नेट. ओके ठीक है तो अपन बंद कर देते हैं ये.
इसको बंद कर देते हैं गाइस मीटिंग। थैंक यू सो मच। सॉरी यार थोड़ा आधा ही वीडियो हुआ। प्लीज गुस्सा मत होना। थैंक यू।